always think that winters have come, it's a good season, a healthy season, but we forget that heart disease affect most people during the winters, particularly the older people. So what is so special about winter? क्यों होता है हार्ट अटैक विंटर्स में? क्या उसमें स्पेशल चीज है और क्या हम कैसे उसको बच सकते हैं उसमें विंटर्स? ठंड बहुत होती है तो हमारी जो नसें होती हैं, जो हमें ब्लड सप्लाई ले जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं। उसको हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। सो जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है तो बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। हार्ट के ऊपर स्ट्रेस और भी तरीके से बढ़ता है विंटर्स में कि ये नसें जब कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो एक सिंपैथेटिक ड्राइव निकलता है, यानी कि ब्रेन से कुछ सिग्नल निकलते हैं जो हार्ट के ऊपर सीधा जाके सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं, यानी कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस हार्ट के ऊपर बढ़ जाता है। विंटर्स में एक और स्पेशल चीज है कि विंटर्स में हार्ट अटैक जनरली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होती है, यानी कि हम ये जानते हैं कि विंटर्स में ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या हम क्या कर सकते हैं विंटर्स में जो हम इस हार्ट अटैक से बच सकें? तो ये अब डायबिटिक्स और ओल्डर पेशेंट्स में बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। मैं ये नहीं कहूंगा यंगर्स में कम ध्यान देना होता है। यंगर्स में आजकल हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया में। सो द यंगर पॉपुलेशन ऑल्सो हैज टू बी केयरफुल। सो इट इज अ जनरलाइज्ड precautions that every human being has to take during winter. So what are those precautions? पहली चीज कि विंटर्स में टेम्परेचर जब डाउन होता है तो हमें अपने कपड़े ध्यान रखना चाहिए, हमें वेल क्लोथ्ड रहना चाहिए, हमें कोट, स्वेटर और गर्म कपड़े पहन के अपने आप को ठंड से बचना है। हमें वॉकिंग और अवॉइड करनी चाहिए विंटर में। People drink a lot. So by drinking I mean during winters they think the alcohol gives them that heat. So they drink a lot of alcohol. With the alcohol they eat a lot of food. Both the things are bad for the heart. So moderate drinking is okay, but anything beyond moderate drinking is really bad. फिर तीसरी चीज देखी गई है कि वो स्मोक करते हैं, कि गर्मी देती है स्मोकिंग। वो भी बिल्कुल गलत है। स्मोकिंग से हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ जाते हैं, बिल्ड डाउन कर लेते हैं। चौथी चीज कि हम पानी कम पीते हैं विंटर्स में, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। डिहाइड्रेशन से ब्लड थिक हो जाता है और क्लॉट्स बन सकते हैं और ये कॉज कर सकता है हार्ट अटैक्स। सो इफ आई पुट ऑल टुगेदर द यूजुअल प्रिकॉशंस आर देयर, बट इन विंटर देयर आर सम स्पेशल प्रिकॉशंस वन हैज टू टेक. Check your blood pressure more regularly. We find many patients who are hypertensive taking medicines during winters need more medicines. So check your blood pressure more often than you ever did. Prevent excessive drinking. Stop smoking. Don't excessively eat. These partying which happens in winters also is not a good thing to happen because people do binge drinking. They drink a lot, eat a lot, which again is not good for the heart. So all these things make us aware that winter is a special season to take care of. One needs to do when you suspect a heart pain. So first thing is, क्या वो डायबिटिक है, क्या उसको स्मोक करता है, क्या उसकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की? अगर इनमें से कुछ भी है, so any chest pain could be heart attack. He should go immediately to the emergency and get an ECG and a blood test, which can help us diagnose heart attack. Because if heart attack is treated well in time, we can save many more lives than we can actually think of. People ignore many of the initial heart symptoms, land up late in the emergency, then have huge expectations, then we are not able to fulfill those expectations many times. So reach hospital early, take good precautions, and you will sail through any winter that may happen. So हमें कब सस्पेक्ट करना चाहिए कि एक मरीज को हार्ट अटैक है? क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं कि उसको पेशेंट को घर पे ही पता लग जाए कि ये हार्ट अटैक हो सकता है? हार्ट अटैक के कोई बड़े स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। तो एक भारीपन होना छाती में, एक अनईजी फील करना, ऐसा लगना कि कुछ भारी मेरे छाती के ऊपर रखा है, या मेरा किसी ने गला दबाया हुआ है, या मेरे दोनों हाथों में दर्द जारी है, ये सिम्टम्स बहुत कॉमन है। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं गैस के साथ। ये कंफ्यूजन बहुत खराब है क्योंकि कई बार वो गैस जैसा ही लगता है, एसिडिटी लगती है कि छाती पे एसिडिटी हो रही है। तो कई लोग पैंटोसिड और डाइजीन लेते रहते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो अगर आपने एक बार डाइजीन ले ली, पैंटोसिड ले ली, आप नहीं ठीक हो रहे, तो इसका मतलब ये हार्ट अटैक है और कुछ नहीं है। तो अगर हम ऐसी छोटे छोटे सिम्टम्स को ठीक टाइम पे पकड़ेंगे तो हम अपना इलाज बहुत अच्छे से करा पाएंगे और मेनी लाइव्स कैन बी सेव्ड बाय डूइंग ऑल दिस। लेकिन अगर एक एस्पिरिन की टैबलेट ले लें, एक एस्पिरिन जो एक नॉर्मल एस्पिरिन सरदर्द के लिए होती है डिस्प्रिन, अगर एक डिस्प्रिन की टैबलेट ली जाए तो हम बहुत फायदा कर सकते हैं उस मरीज को जब तक वो इमरजेंसी में पहुंचता है। नाउ वी ऑल्सो मस्ट नो हु आर द पीपल एट रिस्क हु आर लाइकली टू डेवलप अ हार्ट अटैक एंड दिस विंटर ऑल दीज पेशेंट्स हु आर एट रिस्क मस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ देम। सो हाइपरटेंशन, diabetes, obesity, older people,
those with a family history of heart disease, those who smoke, those who have high cholesterol are always at a high risk of a heart attack. He should always have an alarm bell in his mind that I am one of those who has a high risk. I have to take all the due precautions I can to prevent a heart attack every time and every winter. This is very important, that one must risk stratify himself, and risk stratification is very important. Prevent a heart attack, and prevention, as we know, is always better than cure. So all people who have blood pressure should take extra care that their medication may go up. They will have to eat less salt. They will have to keep themselves warm. Doing all this, your blood pressure can be controlled. Now, what about diabetics? Diabetics tend to eat more during winters. There is more partying during winters. By eating more or by drinking more alcohol, your diabetes can go hayway. So you have to take all the due precautions to prevent diabetes going all the way. So in conclusion, I would say that winters brings more heart attacks, winter brings more blood pressure, winter worsens diabetes. We have to take care of ourselves that we don't end up in a heart attack during winters.